Hello, my dear educators. This is Meenakshi Narula, and this video is being recorded for in-house training. You know very well, we have to make lesson plans before the start of every month. So I have already shared with you deadlines when you have to submit the lesson plan. We already started with a different format of lesson plan in the first term, but I could notice some of you were able to follow the instructions to the T, but some of you were not able to understand in which format we have to give the lesson plan. So, what all details are required to be given. So, we have decided this year, like the term two, we will be continuing with the last year's lesson plan. I have tweaked some of the points over here. Make sure you go through them. And in case you have any confusion, you may discuss the same with me. So, here, teachers planner, that is the lesson plan is format is front of you. Teacher's name, you need to mention your name over here, class and section, the subject, and the month. Here I have added all the dates for the month of October, which is going on, which is already started. So October 22. You have to mention the name of the chapter, topics, and the subtopics that you will be covering in the entire month. Okay, so you can press enter, and this is how number of bullets will be increased. Okay, now academic vocabulary, what all new words you will be sharing with your children. This should be done for all the teachers, for all the subjects, right? Be it Hindi language, English language, be it any subject, I mean sciences, social sciences, mathematics, what all new terminology that you are sharing with your students, you have to mention all the academics terms in this box. And then date from and to I have already mentioned, and 4 weeks, right? Many of the holidays are there in this month, Diwali break, the Shara break. So accordingly, I have already mentioned like Sundays all, so that you will be able to enter the details in the format, right? So learning objectives you need to mention over here. What are the learning objectives of the particular topic of the particular chapter? For that, please do refer to the textbook that you are referring to. Like, what is your objective to teach the students? Do refer to the curriculum that has been shared with us by CBSE. All the learning objectives have been clearly defined. Right now, the key competences. As you can see here, key competences. You need to, if you take a printout, you can tick. But right now, you are working in a soft copy. Make sure you highlight what all key competences you are enhancing in your students through different activities that you are planning: collaboration, creativity, communication. Okay, so and more are there: emotional development, social responsibility, learning to learn, right? So what all key competences you are enhancing, you are fostering in our students through relevant activities. So if you are highlighting collaboration, so in your lesson plan there should be some of the activities, group activities planned. Okay, if you're talking about communication, make sure you engage your students in some spoken activities where the children, they are coming forward, they are sharing their thoughts. Emotional developments, when you are connecting the same with the life skills like social responsibilities. Again, then if you are engaging your students in socially useful productive work, learning to learn, if you are adding on some kind of metacognitive strategies in your lesson plan. So what all things, what all key competencies you are highlighting relevant to that, in sync with that, some of the tasks should be mentioned in your lesson plan. Next is multiple intelligences. As you can see here, I have mentioned all the multiple intelligences. I'll explain you like one by one each and every multiple intelligence. See, many of the teachers, they are new and they want to understand the lesson plan format. That's why I'm recording it, so that you can watch the same at your own pace. Linguistic intelligence, like you, what you are doing to enhance the learning of the students who are word smart, any kind of writing skills that you are giving to your students. Logical, mathematical intelligence, number or reason smart. Spatial, you are um, adding some art integrated activities. Bodily kinesthetic, body smart. Are you integrating your learning with the sports? Okay, accordingly you can talk to the sports department and engage the students in some kinds of activities. Musical intelligence, like are you involving your children in some kind of musical activity? Like maybe I have already given you some examples. Like if you are talking about water cycle,
Are you engaging your students in a song that is based on water cycle, or maybe a reproduction, that is mitosis, meiosis, periodic table? There are a number of songs, dances, fractions, like in mathematics you are teaching. So you can relate the same to the music department. You can talk to them. Okay, musical intelligence can be enhanced to our students. Interpersonal intelligence, if you are engaging the students in some collaborative task, interpersonal skills can be enhanced. Interpersonal, intrapersonal intelligence, okay, are you giving some kinds of activities like independent practice to your students as homework, or maybe any kind of task where they'll be able to enhance their understanding, where they will be able to share their understanding also in any of the forms, if be it spoken part, be it writing, be it research work, whatever it is, right? So now naturalistic intelligence, are you connecting the children's learning with sustainable development goals, with nature, with the environment? Okay, so accordingly make sure you highlight the same. Please, it should not happen like you are not covering any of the intelligence. I know that it is not possible for you to enhance each and every intelligence in each and every chapter, but at least you should be able to focus on some of the strategies, right? See, now you look at the format. I have already given you days and dates, topics that would you like to cover, and the relevant strategies or the activity you have to mention. For example, 3rd of October, if you discussed the half yearly papers with your students, you have to mention like what all things were planned and how did you do that discussion. Think, pair, share activity you conducted, or whatever, you have to mention the activity. Teaching aids, you have used some, you have to mention. If you have used YouTube links, you have to mention those links. Khan Academy, what all things you refer to, what all links you refer to, what all resources that are available, you can mention the links over there. And any kind of homework, independent practice, IP stands for independent practice, and collaborative task that you have assigned to your learners, or maybe any kind of research work that you have assigned to your children, right? You see, all the Sundays, holidays, I have already mentioned. Make sure you fill in the appropriate columns. Okay. And it's not like that if you see the column, the cell size is small, make sure you can increase it. When you add more details, it will automatically increase. Okay. Give the suitable details, give the relevant details, whatever documents are required. Make sure you share the links also over there. Okay. And when we are talking about homework, if you are giving some kind of practice work, you please do mention book page number, workbook page number over there. Any kind of questions that you are referring to, make sure you mention that. And if you are giving any kind of research work, make sure you mention and share the YouTube links for the children's reference as well. Okay. Give some kind of collaborative task where the children, they will be able to collaborate with the parents, and they can come up with some innovative ideas. Okay, so don't give monotonous kind of task everywhere. Wherever you have to mention, I know every day you do not give the homework, it is twice a week for your particular subject, so mention the date, the day. Okay, accordingly you have to mention, otherwise you can write no homework day for that particular subject. For example, you don't assign the homework on Thursdays, so in that particular column you please do mention no homework day for that. Okay, so now, next, okay, this is really very important. Please have a look at this. Learning outcomes. You have to mention the learning outcomes of the students. How will you measure the children's learning? You have set some learning objectives. You have cleared those learning objectives to your students. Like, these are the learning objectives. Why are we learning fractions? Why are we learning Pythagoras theorem? Where will we use it? Why are we trying to find the area? Okay, what is the objective behind? So when you have already mentioned these points, so what you have to do is you have to now mention the learning outcomes. How will you measure the children's understanding? For that, please make sure you refer to NCERT's learning outcome manual that is there for all different stages. That is by CBSE too. And I have already shared the links with you. I will again share all the links in the description box. Make sure you download and refer to your class, your subject respective learning outcomes, and mention those learning outcomes over here. And your children should be able to reflect those learning outcomes.
Okay, don't mention just for the sake of mentioning only. Worksheets given. Every weekend, please make sure you share the worksheets with your students, okay, related to the topics that you are taking in your class. So what revision work you have done in the class, if you have taken any class test, formative assessment that you have taken during the month, I mean, that is your planning. Okay, please make sure you mention that also, what kind of formative assessment you will be taking, whether it will be a quiz, whether it will be any kind of project or any kind of case study you have assigned to your student. So accordingly, you have to mention that kind of formative assessment, whether you have taken pen and paper tests. So accordingly, make sure you mention all the details in the respective column. And it is must for you to conduct, it should not be empty, it should not be blank. It is must for you to conduct at least one class test, maybe formative assessment, during at least a period of 15 days. Okay. So name of the students who required remedial worksheets and your efforts, initiatives for the same. In our class, obviously, all the students, they do not understand each and everything in one go. Some of the students, they require remedial classes, they require remedial worksheets also. So what did you do for them? Okay, have you given them some kind of easy to complex step by step going worksheet? Okay, or you have provided with them previously learned concepts, you have asked them to revise those concepts once again. So accordingly, you have to mention your steps also, your initiatives also for that. Now, sunny areas and muddy areas, this you have to fill in after your lesson plan is done, after your lesson plan is implemented. At the end of the month, you have to mention what were the sunny areas, what were the muddy areas. Were you able to complete the planned syllabus well in time? Did you find any difficulty in completion of some kinds of activities? Did you find children were not cooperative? Did you find children were not, you see, present also in the class? Most of the time you find maybe you have noticed less attendance. Okay, that was observed. So accordingly, you have to write the details over here. Muddy areas and sunny areas. Okay, you have to differentiate accordingly, plus and minus. Okay. Now, pedagogy, I have already mentioned, this is for your reference, like what kind of pedagogy you would like to use for your students. Interdisciplinary instructions, teaching, that is arts, storytelling, sports, work education, seva, collaborative learning, cooperative learning, reciprocal teaching, discussions, group projects, peer tutoring, blended learning, use of ICT tools, flipped learning, computational learning based on logical reasoning, right? Decomposition, dividing the task into different parts, patterns, experiential learning, problem solving, learning through games, case studies, simulations, portfolios, presentations, projects. See number of activities I have mentioned here. So make sure you use the relevant strategies for revision, for any kind of felicitation in the class, for formative assessment, also for homework as well. Okay, so use them at relevant places wherever it is required. Then teacher signature and the feedback that will be given. So teachers, make sure you follow this lesson plan. Okay, I'll be explaining you the same in Hindi as well. ये जो लेसन प्लान फॉर्मेट है ये आपको सारा इंग्लिश में लिखा हुआ है. इफ यू वांट टू ट्रांसलेट यू कैन गो अहेड विद दैट, अदरवाइज डोंट मेक एनी चेंजेस टू इट. आप इसी में अपनी डिटेल्स इसमें फिल इन कर सकते हैं. ठीक है, तो आपको अपना नाम इसी में एंटर करना है, आपकी क्लास, आपका सेक्शन, सब्जेक्ट और मंथ ऑलरेडी मेंशन किया हुआ है. कौन सा चैप्टर बच्चों को पढ़ा रहे हैं, कौन सा पार्ट है, कविता है, क्या है, वो आपको सारा अपना एक मंथ में, जो आपने मंथली प्लानर बनाया हुआ है कि अक्टूबर में, नवंबर में, दिसंबर में, इन 3 महीनों में आपको अपने मंथ वाइज बनाया है ना कि आपको क्या क्या चीजें कवर करनी है. तो आपको वो जो चैप्टर पाठ पढ़ाना है, कविता है, जो व्याकरण के टॉपिक हैं, वो सारे इसमें मेंशन करने हैं. उसके बाद में उसके आगे के जो टॉपिक्स हैं, जो सब टॉपिक्स हैं, वो रिस्पेक्टिव कॉलम्स में आप मेंशन करेंगे. और बच्चों की जो वोकैबुलरी है, जो शब्दावली उनकी, उनमें वृद्धि कर रहे हैं आप, कौन से नए वर्ड सीख रहे हैं. आप देखिए हिंदी में, इंग्लिश में तो हम यूजली बच्चों को लिखवाते ही हैं, कठिन शब्द वो लिखते हैं, उनके मीनिंग लिखते हैं. तो वो कौन से नए शब्द कर रहे हैं जो आपने बच्चों को पहले चैप्टर्स में करवाए हैं, अगर वो शब्द रिपीट हो रहे हैं तो उनको लिखने की जरूरत नहीं है.
कौन सी एकेडमिक वोकैबुलरी, उनसे कौन से नए शब्द वो लर्न कर रहे हैं, वो सारे के सारे शब्द आपको यहाँ मेंशन करने हैं। एंड यू हैव टू डिस्कस द सेम विद योर चिल्ड्रन ऑल्सो, कि इस महीने में हमारे जो वोकैबुलरी है वो हमारे ये न्यू वर्ड्स हम एनहांस करेंगे, अपनी वोकैबुलरी को बिल्ड करेंगे, एंड आप उसको अपनी क्लासरूम में डिस्प्ले बोर्ड के ऊपर वो सारे वर्ड्स डिस्प्ले करेंगे इन ऑल द सब्जेक्ट्स। ओके, वो सारे डिस्प्ले करेंगे। डेट फ्रॉम 1 अक्टूबर टू 31 अक्टूबर मैंने पहले ही मेंशन कर दिया है, 4 हफ्ते हैं, मैंने मेंशन कर दिया है। लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स, आप बच्चों को जो पढ़ा रहे हो आपका उद्देश्य क्या है उस चैप्टर को पढ़ाने के लिए। पर्यायवाची शब्द अगर बच्चा सीख रहा है, विलोम शब्द सीख रहा है, अलंकार सीख रहा है, अलंकार के कौन से टाइप्स हैं वो सीख रहा है, उनको वो कहाँ यूज करेगा, आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, वो सब चीजें आप यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है। एंड की कॉम्पिटेंसेस, बच्चों की कौन कौन सी स्किल्स, कौन कौन सी क्षमता जो है उसके ऊपर आप वर्क कर रहे हैं। कोलेबोरेशन है, क्रिएटिविटी है, कम्युनिकेशन है, डिफरेंट स्किल्स। आपको पता है कि बच्चे एक दूसरे के साथ कोलैबोरेट करके काम करते हैं, उनमें कितना नवीनीकरण, जो भी आप हिंदी में बोलते हो उसी, वो उसमें कितना वो लेकर आते हैं। कम्युनिकेशन स्किल्स, उनकी बातचीत की कला को कैसे एनहांस कर रहे हो। ठीक है, उनकी इमोशनल डेवलपमेंट, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, और वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं पढ़ने की, कैसे आप मेटाकॉग्निटिव स्ट्रैटेजीज मैंने आप सबके साथ पहले भी शेयर करी हैं, उसमें से आप यूज करिए, बच्चों से पूछिए वो कैसे सीखते हैं और कैसे उस चीज को एनहांस कर सकते हैं। तो आप की कौन सी एक्टिविटी कौन सी स्किल को एनहांस कर रही है, उसके अकॉर्डिंगली यू हैव टू मेंशन, आपको मेंशन करना है इन पर्टिकुलर कॉलम में। राइट, तो मल्टीपल इंटेलिजेंसेस में से कौन सी मल्टीपल इंटेलिजेंस जो है वो आप फोकस कर रहे हैं बच्चों के ऊपर। हिंदी और इंग्लिश, अब हिंदी की मैं बात कर रहे हैं तो देखिए, हिंदी में आप बच्चों को बहुत सारे लेखन का कार्य उनको देते हैं, निबंध लिखते हैं, डायरी एंट्री लिखते हैं, अलग अलग राइटिंग स्किल्स उसे उनकी इनहांस करते हैं, तो वर्ड स्मार्ट डिफरेंट एक्टिविटीज उनको देते हैं। उनको रिलेट करिए रियल लाइफ के साथ। एंड मोरोवर, इस मंथ में तो बहुत सारे आपके पास इवेंट्स हैं, बहुत सारे फेस्टिवल्स हैं, उससे रिलेट करके उनको राइटिंग स्किल्स दीजिए। ओके, एंड आर्ट इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो पिक्चर स्मार्ट उसको हाईलाइट कर दीजिए। अगर आप बच्चों को किसी एक्टिविटी में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, हिंदी में नुक्कड़ नाटक आप कराते हैं या कोई और गतिविधियां आप बच्चों की कराते हैं, म्यूजिक के साथ रिलेट करते हैं, कविता गायन करवा रहे हैं, तो वो आप बॉडीली किनेस्थेटिक और म्यूजिकल इंटेलिजेंस को एनहांस कर रहे हैं, तो उसको हाईलाइट कर दीजिए। ओके, एंड देन इंटरपर्सनल एंड इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस, बच्चों को अगर अकेले करने के लिए कोई काम दिया है, दे आर नोइंग मोर अबाउट देमसेल्व्स, काइंड ऑफ मेटाकॉग्निशन, अपने बारे में लिख रहे हैं, अपने बारे में जान रहे हैं, सो वो सेल्फ स्मार्ट है, दूसरों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं, कोलेबोरेटिव टास्क है, नोइंग मोर अबाउट ईच अदर, दूसरों से डेटा कलेक्ट कर रहे हैं। इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस यू आर फोकसिंग ऑन। ओके, एसडीजीज के साथ रिलेट कर रहे हैं, नेचर के साथ रिलेट कर रहे हैं, वो अपने एनवायरमेंट, अपने वातावरण के बारे में जान रहे हैं, तो नेचर स्मार्ट। तो आपको देखना है कि इस पर्टिकुलर चैप्टर में आप कितनी ज्यादा से ज्यादा मल्टीपल इंटेलिजेंसेस पर फोकस कर सकते हैं। राइट, नाउ डे और डेट मैंने सारे ऑलरेडी मेंशन कर दिए हैं, फ्रॉम 1 टू 31। कोई छुट्टी आए कुछ है उसको डिलीट नहीं करना है, आई ऑलरेडी मेंशन। कहाँ पर नवरात्रि है, दशहरा है, मीटिंग है, संडे है, एवरीथिंग हैज बीन मेंशन्ड। ओके, सो यू हैव टू फिल इन द रिस्पेक्टिव कॉलम्स। अब देखिए 3 अक्टूबर और 6 अक्टूबर को, जैसा कि आपका पहले का प्लान था कि आपको हाफ ईयरली के एग्जाम बच्चों के साथ डिस्कस करने हैं, तो आप वहां पर लिखेंगे हाफ ईयरली के जो एग्जाम्स हैं, बच्चों के आंसर शीट्स हैं, वो आपने डिस्कस करनी है, उसकी स्ट्रैटेजी क्या है वो भी मेंशन करना है। कि आपने बच्चों को पेपर दिखाए, क्या उन्होंने नंबर काउंट करके पेपर वापस कर दिया आपको, या उसके बाद आपने उनसे डिस्कस भी किया कि कहाँ पर उसकी मिस्टेक्स हैं, वो कैसे उसमें इम्प्रूव कर सकते हैं। सी, यहाँ पर मेटाकॉग्निशन का जो मैंने आपको फॉर्म दिया हुआ है, मेक श्योर यू यूज दैट, एग्जाम रैपर्स को यूज करिए, बच्चों को फिल करने के लिए दीजिए कि कहाँ कहाँ उनकी कमियां रह गई, एंड हाउ विल दे बी एबल टू इम्प्रूव इन द अपकमिंग टेस्ट। तो वो यहाँ पर आप यूज करिए। टीचिंग एड्स क्या यूज कर रहे हैं, यूट्यूब लिंक्स आपने कौन कौन से देखिए, आप होमवर्क के लिए भी बच्चों के साथ बहुत सारे यूट्यूब लिंक शेयर करते हैं, आई बिन नोटिसिंग। लाइक जब आप होमवर्क शेयर करते हो, यूट्यूब का लिंक होता है, कोई डॉक्यूमेंट होता है, आपकी कोई वर्कशीट होती है, आपकी सारी के सारी वर्कशीट्स के ऊपर नंबर होने चाहिए, वर्कशीट नंबर, डेट, तो अकॉर्डिंगली यू हैव टू मेंशन द सेम। और जब आप लेसन प्लान भेजेंगे मुझे, यू विल ईमेल द सेम टू मी, आपको इसके साथ में वो आपकी वर्कशीट, आपका जो होमवर्क है, पीडीएफ है, वो सब भेजना है साथ में, दैट शुड बी अ कंपाइल्ड वन। ओके, सो होमवर्क आपका कैसा होना चाहिए, या तो इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस, बच्चों के अकेले करने के लिए प्रैक्टिस की बात कर रही हूँ,
ये सिर्फ रेपिटेशन नहीं हो कि आपने सपोज क्लास में एक चीज लिखाई है, घर जाके भी वही चीज करनी है, वो चीज नहीं है। बच्चा इंडिपेंडेंटली रिसर्च करके उसको अपने आप कुछ करने की कोशिश कर रहा है, राइटिंग स्किल है, आपने एक पैराग्राफ दिया है उसमें से क्वेश्चंस के रेलेवेंट आंसर वो फाइंड कर रहा है, ग्राम अपने आप को ट्वीक करके, ग्रामेटिकल उसमें जो चेंजेस हैं वो करके फिर वो लिख रहा है। ये नहीं है कि आप सब उसको सिर्फ क्वेश्चन मार्क करवा दो कि ये यहाँ से आंसर लिखा हुआ है, ये आप कॉपी कर लो। नो, इसमें बच्चे की लर्निंग कोई नहीं है, बच्चा अपनी क्रिटिकल थिंकिंग को यूज नहीं कर रहा है। तो दैट काइंड ऑफ होमवर्क टू बी गिवन टू द स्टूडेंट्स, रिसर्च वर्क टू बी गिवन। आपको पता है कि पेरेंट्स ज्यादा बच्चों को इंटरनेट यूज नहीं करने देते, मोबाइल फोन नहीं देते, कब लैपटॉप सभी के पास नहीं है। सो अकॉर्डिंगली इट इज बेटर अगर आप उनको लाइब्रेरी में से कुछ बुक रिसर्च करके उसके बारे में लिखने के लिए देंगे, तो दैट वुड बी बेटर फॉर देम। ओके, देखिए ये सारी की सारी जो डेट है, दिन तारीख सब लिखा हुआ है ऑलरेडी, संडे हॉलीडेज सब कुछ मेंशन किया हुआ है, दिवाली ब्रेक। कोई कॉलम डिलीट नहीं करना है, रिस्पेक्टिव कॉलम्स आपको फिल करने हैं, उसके कॉलम के सेल के साइज पर मत जाइए। व्हेन यू विल बी एडिंग योर डिटेल्स वो ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगा। मेक श्योर यू गिव ऑल द डिटेल्स। ओके, क्या पढ़ाना है आपको उस पर्टिकुलर दिन में, क्या आपकी स्ट्रैटेजी रहेगी, ठीक है, कौन सी विजिबल थिंकिंग रूटीन यूज कर रहे हैं, कौन सा यूट्यूब लिंक यूज कर रहे हैं, अगर होमवर्क के में भी दे रहे हैं तो मेक श्योर यू मेंशन इट। और अगर आपका होमवर्क हफ्ते में आप 2 दिन असाइन करते हैं तो बाकी दिनों में नो होमवर्क डे आप मेंशन कर देंगे। सपोज आप बुधवार आपका हिंदी व होमवर्क बुधवार और शुक्रवार सपोज जाता है, सो आप बुधवार और शुक्रवार में होमवर्क मेंशन करेंगे, यूट्यूब का लिंक मेंशन करेंगे, और बाकी दिन में आप लिख देंगे कि नो होमवर्क डे। ओके, सो मेक श्योर यू गिव ऑल द डिटेल्स फॉर योर स्टूडेंट्स। नाउ द नेक्स्ट इज, अभी आप इसका देखिए जरा, ये जो लर्निंग आउटकम्स हैं, यू हैव टू मेंशन दीज लर्निंग आउटकम्स। तो आपको अपने बच्चों के लिए एनसीईआरटी का जो लर्निंग आउटकम का मैनुअल है फॉर एलिमेंट्री फॉर सीनियर्स क्लासेस, ओके, उसमें मेंशन है। और सीबीएसई का भी एक लर्निंग आउटकम का मैनुअल है फ्रॉम क्लास 1 to 10। तो उसमें से आप लर्निंग आउटकम्स जितनी है वो उसमें से लेके आपके चैप्टर के साथ, आपके टॉपिक के साथ जो रिलेटेड है, आपको उसमें वो मेंशन करना है। एंड यू हैव टू अचीव दोज लर्निंग आउटकम्स, आई मीन आपके स्टूडेंट्स उन लर्निंग आउटकम्स को रिफ्लेक्ट कर पाए एट द एंड ऑफ द चैप्टर। ओके, आई मे आस्क एनी ऑफ द चाइल्ड लाइक whether they are able to exhibit those learning outcomes or not. So make sure you mention those learning outcomes. Refer to the CBSE manual, NCERT manual. Now worksheets given, what all worksheets you have given? एवरी वीकेंड यू हैव टू गिव वन वर्कशीट टू योर स्टूडेंट्स। ओके, अगर आपके 2 होमवर्क के डेज हैं, एक दिन आपने नॉर्मल होमवर्क बच्चों को असाइन करा है फ्रॉम देयर बुक, फ्रॉम एनी काइंड ऑफ एक्टिविटी और वट एवर इट इज, और एक दिन आपको वर्कशीट देनी है, राइट तो जो आप वर्कशीट दे रहे हो मीन्स वीक में आपकी 4 वर्कशीट्स, मंथ में आपकी 4 वर्कशीट्स जा रही हैं, तो यू हैव टू मेंशन द सेम। कहीं कहीं आपका छुट्टी आ रही है, कहीं कहीं आपका कुछ टेस्ट ले रहे हो, तो चलो वो 4 की जगह 2 हो सकती हैं, जितनी भी वर्कशीट्स हैं, तो यू हैव टू मेंशन द सेम। अटैच करनी है आपको वर्कशीट इस लेसन प्लान के साथ, ठीक है, नंबर्ड होना चाहिए और प्रॉपर डेट होनी चाहिए उसके ऊपर। रिवीजन वर्क जो आप क्लास में करा रहे हैं, आपने जो क्लास टेस्ट लिया है, आपने जो फॉर्मेटिव असेसमेंट का टेस्ट लिया है, क्विज आपने कंडक्ट कराया है, बच्चों को बोला है थिंक पेयर शेयर के थ्रू अपनी डिटेल्स शेयर करने के लिए, दे हैव डिस्कस्ड अबाउट अ पर्टिकुलर टॉपिक, आपने डिबेट कराया है, ग्रुप डिस्कशन कराई है, क्विज लिया है, पेन एंड पेपर टेस्ट लिया है, ओरल टेस्ट लेना है, जो भी आपकी डिटेल्स हैं आप इसमें वो मेंशन करेंगे। देन नेम ऑफ द स्टूडेंट्स हु रिक्वायर्ड रिमीडियल वर्कशीट्स, आपकी कक्षा के जितने बच्चे हैं सारे के सारे तो वो लर्निंग आउटकम्स को एक बार में रिफ्लेक्ट नहीं करते, दे आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड द कंटेंट। कई बच्चों को आपको चीजें दोहरानी पड़ती हैं, बार बार बतानी पड़ती हैं, कईयों को उनके उससे पहले वाले लेवल से भी स्टार्ट करना पड़ता है, राइट। सपोज कि अगर आप फ्रैक्शन का एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन पढ़ा रहे हैं अपनी क्लास में, बच्चे को ये नहीं पता कि न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर क्या है, कैसे होता है, तो आप उसको एक लेवल नीचे का एक वर्कशीट देते हैं पहले, टू ब्रिंग द चाइल्ड टू द सेम लेवल एज अदर चिल्ड्रन आर देयर इन द क्लास। तो आपने उन बच्चों के लिए क्या किया, रेमिडियल वर्कशीट उनको दी, या उनके लिए कौन सी स्ट्रेटजीज अपनाई, आपने टॉपिक दोबारा एक्सप्लेन किया, यू हैव टू मेंशन ऑल द थिंग्स ओवर हियर। नाउ सनी एरियाज एंड मडी एरियाज, कौन से आपने जो एक्टिविटीज करवाई हैं क्लास में उसमें से कौन सी एक्टिविटीज बहुत ही अच्छी गई, स्टूडेंट का एंगेजमेंट लेवल उसमें अच्छा था, एंड द चिल्ड्रन दे वर एबल टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट, उनको बहुत अच्छे तरीके से वो कॉन्सेप्ट समझ में आया, वो आपको इसमें सनी एरियाज में मेंशन करेंगे। मडी एरियाज में आपने कोई नई स्ट्रेटजी नई टेक्निक यूज करी पर वो सक्सेसफुल नहीं रही, यू वांट टू चेंज इट,
मे बी आपने जो प्लान किया था वो कंप्लीट नहीं हो पाया बिकॉज ऑफ सम रीजन, बिकॉज ऑफ एब्सेंटिज्म ऑफ द स्टूडेंट्स, बिकॉज ऑफ योर एब्सेंटिज्म। मे बी हो सकता है कि आपने ज्यादा प्लानिंग कर ली, बच्चों को एक पर्टिकुलर टॉपिक में आपने सोचा था कि 2 दिन में कंप्लीट हो जाएगा, बट आपको 4 दिन लगाने पड़ गए, जिसकी वजह से आपके लास्ट के जो डेज का प्लान था, यू वर नॉट एबल टू कवर इट, और वो आपको आगे नवंबर में कवर करना है। जो भी आपके सनी एंड मडी एरियाज हैं, आपको उसमें मेंशन करेंगे। आपके रेफरेंस के लिए मैंने डिफरेंट पेडागोजीज यहाँ पर मेंशन करी हैं, इसमें से आप देख लीजिए कोई भी रेलेवेंट स्ट्रैटेजी जो आप यूज करना चाहती हैं, यू कैन यूज द सेम। यहाँ कुछ नहीं करना है, दिस इज जस्ट फॉर योर रेफरेंस, ओके। यहाँ से आप एफए में कौन सी स्ट्रैटेजी डालना चाहते हैं, क्लास टेस्ट के लिए कौन सी स्ट्रैटेजी यूज करना चाहते हैं, होमवर्क के लिए कौन सी स्ट्रैटेजी यूज करना चाहते हैं, तो यू हैव टू सिलेक्ट इट अकॉर्डिंगली, ओके। एंड देन यू हैव टू साइन इट एंड सबमिट इट टू मी, right? And then I will be giving my feedback to your lesson plans. Make sure you submit your lesson plans well in time as per the deadlines, the timelines that has already been shared with you. Okay. So anything is there in your mind? Any questions you would like to ask? Make sure you go ahead with that, but submit your work well in time. Okay. Thank you. Go ahead. All the best.